हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है हमारा जो पेंशन अपडेशन का इशू एटलीस्ट अभी एनडीटीवी प्रॉफिट का कल का इशू में ई पेपर में पब्लिश हुआ है। तो आगे आगे भी आ सकता है। एक पब्लिश हुआ है, क्या पब्लिश किए हैं वो लोग डिटेल में आज का वीडियो में हम देखेंगे। और हम चाहते हैं कि हमारा इशू चारों तरफ सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो। तो चलिए, तो कम से कम एनडीटीवी प्रॉफिट में ये पब्लिश हुआ है 16 का डेट में। तो चलिए डिटेल में देखते हैं क्या पब्लिश हुआ है इसमें एनडीटीवी प्रॉफिट का ई पेपर में। 18 ईयर्स ओल्ड सुप्रीम कोर्ट पेंशन केस कीप्स रिटायरीज इन लिम्बो एज पीएसयू बैंक फेस लायबिलिटी रिस्क, यही उसका हेडिंग दे के पब्लिश हुआ है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, 18 ईयर्स ओल्ड एससी पेंशन केस कीप्स रिटायरीज इन लिम्बो एज पीएसयू बैंक फेस लायबिलिटीज रिस्क। रिटायरीज लिम्बो मतलब रिटायरीज स्टॉक होके रह गए, एक जगह में ब्लॉक होके रह गए और बैंक को लगता है कि लायबिलिटीज उनका बढ़ रहा है। द लिटिगेशन वाइडली रेफर्ड टू एज द एमसी सिंगला केस हैज बीन पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट सिंस 2016 आफ्टर originating in the High Court in 2008। तो 2008 से अभी तक 18 ईयर्स हो चुका है। An 18 years legal battle over pension updation for retired public sector bank employees remains stuck in the Supreme Court, prolonging uncertainty for lakh of elderly pensioners while leaving PSU banks exposed to potential significant financial liabilities if the court eventually rules in favor of retrospective pension parity। अगर कोर्ट से आता है रेट्रोस्पेक्टिव पेमेंट करने के लिए एरियर, तो बैंक का लायबिलिटीज बढ़ते जा रहा है, जितना लेट होगा उतना बढ़ेगा। द लिटिगेशन वाइडली रेफर्ड टू एज द एमसी सिंगला केस हैज बीन पेंडिंग 2008 से, मेकिंग इट वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग एंड मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल पेंशन डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग इंडिया स्टेट ओन बैंकिंग सेक्टर। बहुत दिन से पुराना केस चल रहा है अभी भी पेंशन अपडेशन के ऊपर। द पेटिशनर्स आर्ग्यू दैट while serving bank employees benefited from successive bipartite wage settlement and salary revision over the years, pensioners who retired earlier continued to receive pension calculated on decade-old pay structure। जैसे वर्किंग एम्प्लॉय क्या हर सेटलमेंट में बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पेंशनर्स का 30 साल पहले जो बेसिक था आज भी वही बेसिक है, कोई चेंज नहीं हुआ है। डिकेड ओल्ड, 3 decades ओल्ड पे स्ट्रक्चर के हिसाब से। दैट अकॉर्डिंग टू द पिटिशनर हैज क्रिएटेड वाइडनिंग डिस्पेरिटी बिटवीन ओल्डर एंड न्यूअर रिटायरीज डिस्पाइट सिमिलर ईयर ऑफ सर्विस एंड कंपेरेबल रैंक एट रिटायरमेंट। वही है, सेम रैंक सेम स्केल सेम ये में रिटायर किया, लेकिन पहले जो रिटायर किया है उनको बहुत कम पेंशन मिल रहा है, आज जो रिटायर कर रहे हैं उनको पेंशन उनसे बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो ये डिस्पेरिटी इसलिए चल रहा है क्योंकि पेंशन अपडेशन नहीं हुआ है। लाक्स डाई वेटिंग डिस्पाइट एक्सटेंडेड हियरिंग डिटेल पेंशन डाटा सबमिशन एंड एक्सटेंसिव आर्गुमेंट ओवर द पास्ट ईयर, द मैटर कंटिन्यूज टू रिमेन पार्ट हार्ड बिफोर द एपेक्स कोर्ट। For pensioners group, the prolonged delay itself has become one of the central issue in the case. Retirees Association claim that thousands of beneficiaries may never live to see the outcome of the litigation. According to figures circulated by pensioners' bodies, nearly 2.31 lakhs pensioners and family pensioners died between 2008 and 2025. The group estimate that around 56 retirees die every day। 56 रिटायरीज एवरी डे दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। इसी के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो द फिगर आर एडवोकेसी एस्टिमेट्स सर्कुलेटेड बाय रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन एंड आर नॉट ऑफिशियल फाइंडिंग। ये फिगर जो है ऑफिशियल फाइंडिंग नहीं है, ये रिटायरीज एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन का कैलकुलेशन है। रिटायरीज हैव आर्ग्यूड दैट the existing framework violate constitutional guarantee of equality and dignity under Article 14 and 21. They have also relied heavily on the Supreme Court landmark DS Nakara judgment, which held that pensioners cannot be arbitrarily classified for welfare benefits।
pensioners group have repeatedly framed the issue as one of deferred wages rather than discretionary welfare, arguing that inflation, healthcare, inflation, and post pandemic living costs have sharply eroded the real value of old pensions. द अपोजिशन उसका अपोज क्या कर रहे हैं, ये तो पेंशनर्स का डिमांड है, बैंक का, गवर्नमेंट का क्या. द यूनियन गवर्नमेंट, इंडियन बैंक एसोसिएशन एंड सेवरल PSU बैंक्स हैव अपोज्ड blanket pension parity demand, arguing that pension structure are governed by specific regulation and negotiated settlement rather than automatic revision principle. The respondent have also flagged the potentially large financial impact of retrospective pension revision across the PSU banking system, a factor closely watched by financial market and state-owned lenders. सुप्रीम कोर्ट ऑन द मैटर सो फार. अभी तक सुप्रीम कोर्ट में मैटर क्या है? द सुप्रीम कोर्ट हैंडलिंग ऑफ द मैटर ओवर द लास्ट सेवरल मंथ्स सजेस्ट द बेंच इज एग्जामिनिंग बोथ द constitutional and financial dimension of the disputes. During hearing earlier this year, the court sought detailed comparative pension calculation across multiple retirement, including retirees from the late 1980s, pre-2003 retirees and post-2003 retirees. 3 पीरियड का जो डिटेल मांगे थे उसके बारे में ये मेंशन किया गया है. The direction was viewed as significant because it indicates the bench wanted to quantify the scale of pension disparities before arriving at any conclusion. Argument reportedly advanced substantially through March and April, with pensioners group indicating that final submission from both sides had already concluded. However, the matter has continued to witness further listings, procedural hearing, intervention application and adjournment without a final verdict. रिजल्ट आने से पहले ये डेट पे डेट, तारीख पे तारीख चल रहा है. नेक्स्ट जो डेट है 22 जुलाई 2026 after summer vacation of the Supreme Court. The Supreme Court also appeared to be weighing whether pension updation is enforceable as a constitutional entitlement or remain primarily a policy issue best left to the government and banking authorities. For pensioners, however, the delay carries a more immediate consequence. Many retirees involved in the litigation are now in their late 70s and 80s. Pensioners Association argue that each adjournment reduces the number of retirees who may ultimately benefit if the court rules in their favor after nearly 2 decades of litigation. जितना लेट होता है उतना रिटायरीज दुनिया छोड़ के जा रहे हैं. उनका जीवन काल में वो उसका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे, ना उनको बेनिफिट उनका फैमिली को मिलेगा. तो ये था आज का वीडियो. अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा. और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा. टीम अमेय कुमार मिश्रा, थैंक यू.